कंसोल, अच्छा नाउ दिस कमांड लाइन कंसोल 0, ठीक है। अगेन मैंने आपको कहा था कंसोल पोर्ट्स नॉर्मली राउटर्स में एक ही होते हैं, ठीक है। सो इफ देयर इज ओनली अ सिंगल कंसोल पोर्ट, सिस्टम योर जो सिस्को सिस्टम है, सिस्को सॉफ्टवेयर जो है, इट विल पिक इट एज लाइन कंसोल 0, ठीक है, दैट स्पेसिफिक कंसोल पोर्ट के लिए। बट देर इफ देर आर 1 2 3 तो आप अकॉर्डिंगली उसको लाइन कंसोल नंबर 1, लाइन कंसोल नंबर 2, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन अ पासवर्ड बट ऑन योर लाइन कंसोल, ठीक है। सो यू आर एडिंग 2 लेयर सिक्योरिटी टू योर राउटर, सही। या अभी जब कमांड्स रन होंगी यू विल सी द डिफरेंस व्हेन यू आर restricting your line console password and you are putting a password on your router, दोनों में डिफरेंस क्या, ठीक है। अच्छा, प्लस देयर इज अ एग्जीक्यूशन टाइम आउट कमांड यहाँ पे आपकी है। इससे ये होता है कि लेट्स से आई एम नॉट यूजिंग माय राउटर एंड आई हैव लेफ्ट इट फॉर लाइक आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एंड आई वाज राइटिंग सम कमांड्स इन माय राउटर एंड फॉर 10 मिनट्स मैं उसको छोड़ के चली गई हूँ। सो आई सेट अप एन एग्जीक्यूशन टाइम आउट, ठीक है। इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स बाद द राउटर इटसेल्फ शुड बी लॉग्ड आउट, ठीक है। वो अपने सिनेरियो जो इसके स्टेप्स हैं उनमें से लॉग आउट हो जाएगा। मींस अगेन जब भी कोई न्यू यूज़र आके बैठता है सिस्टम पे, ही और शी शुड हैव टू पुट द पासवर्ड्स अगेन, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जीक्यूशन टाइम आउट, मीन्स वो बंदा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टाइम को, जिससे आपके मोबाइल्स पे होता है, ठीक है। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम आपका मोबाइल लॉक इनेबल हो जाता है एंड एनी पर्सन कैन नॉट एक्सेस इट अनलेस पासवर्ड दे, ठीक है। सो व्हाट एल्स, ये आपका सर्किट होगा जो आपने डिज़ाइन करना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द लैब देन। ओके, सो ऑल यू वुड बी नीडिंग इन दिस लैब इज़ अ राउटर, ठीक है। अच्छा, ये आपकी इंटरफेस है विच यू विल बी यूजिंग, ठीक है। ये आपके आगे लैब्स में यूज़ होंगे व्हेन एवर यू आर सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन पीसी टू द अदर पीसी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। कोई एलिमेंट डिलीट करना हो, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द लैब। सो व्हाट एल्स वी नीड, 2 switches and 2 PCs. Okay, this is our all set of devices. Now we need a cable to connect them, ठीक है। So let's take a straight through cable. Now what interface I am using? I am not connecting my PC to the console port of router, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्जन है, ठीक है। कंसिडर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। आपने फास्ट इंटरनेट केबल, क्योंकि इंटायर आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए इनको आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्ट करें, ठीक है। सो अगेन फास्ट इंटरनेट के थ्रू आप करेंगे। कंसोल पोर्ट कनेक्शन आपके आगे आएंगे, विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल बी यूजिंग कंसोल केबल, राइट। सो अगेन फास्ट इंटरनेट के थ्रू आई एम कनेक्टिंग विद माई पोर्ट ऑफ फास्ट इंटरनेट ऑफ माई राउटर, ठीक है। अगेन स्विच कनेक्शन विद माई राउटर। अच्छा, नाउ यू कैन सी ग्रीन मीन्स आपका लिंक ऑन है, ठीक है। यहाँ से आप आगे कनेक्शन बना सकते हैं। दीज लिंक्स आर ऑन, ठीक है। इन लिंक्स में स्विच पे आपको कोई आईपी एड्रेस नहीं देना होता, ठीक है। स्विच इज लाइक जो आप घर में यूज़ करते हैं, अपनी केबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक कनेक्टर आपने लगाया होता है, उसमें 5-6 स्विचेस लगा दिए होते हैं, ठीक है। बल्ब भी लगाया हुआ है और फैंस भी कनेक्ट किए हुए हैं, 10 to 5 सपोज, जो भी आपकी, और स्पेसिफिकली मोबाइल्स के लिए जो आप यूज़ करते हैं, एक आपकी वो वायर होती है और आगे इसको आई हैव फॉरगॉटन नेम, जो घर में आप लोग यूज़ करते हैं, इफ़ यू कैन रिमेंबर, उसमें आप लोग मल्टीपल जो सॉकेट जो होती है, एक सॉकेट में आगे फर्दर 4-5 ऑप्शन होते हैं, आप सारे जो मोबाइल कनेक्टर्स होते हैं उसमें कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्विच इज़ लाइक दैट वर्जन, ठीक है। आप 10 पीसीज इसके साथ कनेक्ट कर दें।
then this switch is connecting those 10 PCs to your router. ठीक है, and router is the gateway जो आपको इस सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है with the outer world. In this lab, your outer world is these two systems. ठीक है, so it means कि if it's the gateway, it should have a IP address. ठीक है, they communicate with the help of IP address. तो आपको इस राउटर में IP addresses असाइन करने हैं. ठीक है, so let's move toward the CLI window. ठीक है, this is your router interface. इसमें आप सारी कमांड्स रन करते हैं. एक्चुअल में क्या होगा, टू एक्सेस दिस इंटरफेस आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए. यू नीड द हार्डवेयर. आप एक पीसी को कनेक्ट करेंगे अपने राउटर के साथ, देन यू विल execute all those commands not in router but in that PC, and all those commands will be applied on your router. ठीक है, in that case you will be using console port. ठीक है, so now enable configure terminal. ठीक है, so fast ethernet terminal 0x0 है. ठीक है, so this is interface FA0x0 या आप पूरा लिखते हैं. ठीक है, फास्ट ईथरनेट 0x0 और you can write FA0x0. ठीक है, what IP address do you want to assign to it? 192.168. let's say 2.1 255.2. ये आपका मास्क है. ठीक है, लास्ट लैब में you have covered what actually a mask is. ठीक है, जो आपकी क्लासेस थी, IP एड्रेस क्या होता है, मास्क क्या होता है. ठीक है, so you should be familiar with these terms when you are in these labs. ठीक है, okay, कोई mistake, there is some mistake. Sorry, I forgot to write IP address right, and you will turn your link on, so no shutdown. ठीक है, so your link has been turned on. Let's move to your next link, which is interface FA0x1. Assign your IP address. Now this is totally different side of your router. ठीक है, तो आप इसका IP address change कर दें 3.1 255. You can say कि ये core gateway for another set of system. ठीक है, 255.255.0 ये आपका हो गया mask, and again no shutdown. So your entire network is now turned on. जो red link down थे, आपने router की links को IP address assign किया, and now they are turned on. Let's move toward your PC. Okay, I forgot कि किस side पे मेरा कौन सा IP address था, so I can check from here. 0x0 का है 192.168.2.1. let's write it. ठीक है, ताकि confusion ना हो. Right, let's check again. Zero by zero is 192.168.2.1 and 0x1 is 192.168.3.1. Now let's assign IP address to my PC. Definitely उसका भी कोई IP address होगा, but 10 PCs connected हैं, so everyone should be having a different IP address. 192.168 ये मेरा gateway एड्रेस जो है उसी का लेट्स से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. अगर ये आपका राउटर एड्रेस है तो इसके साथ फर्दर सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, और ये आपका मास्क है, तो इट मींस लीविंग योर वन you can connect to 54 set of systems with your this router.
यस डेफिनेटली आपको स्विचेस यूज़ करने होंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है इस नेटवर्क के लिए? 192.168.2.1, दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, लेट्स गिव द IP एड्रेस टू दिस PC। ठीक है, सबनेट मास्क अगेन इसके लिए गेटवे कौन सा है? दिस इज योर गेटवे। थ्री डॉट वन। ठीक, सो लेट्स communicate with your PC. So I am pinging my 192.168.2.10 PC. Let's see आपका रिप्लाई रिसीव होता है कि नहीं। अच्छा, your network is completely fine. I don't know why it's giving request timeout. यहाँ पे आपका आता होता है receive 0 loss total. Okay, let me check again what's the issue. This is your IP address and your mask and your gateway is 192.168.2.1. okay, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, it's 168.3.1. let's check again. it's fine. अच्छा, I am pinging from a PC 0 and I want to communicate with this PC. I'm just checking whether the network is fine, whether I can access from this PC to my other PC. So address of other PC is 192.168.3.10. ओके, आपका रिप्लाई रिसीव हो गया फ्रॉम योर अदर पीसी। इट मीन्स आपका इंटायर नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, व्हाट वर द अदर सेट ऑफ कमांड्स? गिविंग, लेट्स एग्जिट योर फेजेस। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आई सेड कि आप अप्लाई कर सकते हैं your passwords, right? So let's set your password आपका क्या host name change करना चाहते हैं? if you want to change your host name to let's say R1, ठीक है, so your host name has been changed. similarly आप कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं, enable secret, let's say I write 1 2 3, right? और प्लस, अच्छा लेट्स सी कि इससे आपका पासवर्ड कहाँ अप्लाई हुआ है। जब आप टोटली सारी कॉन्फ़िगरेशन से आउट हो जाते हैं, आपका राउटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, नाउ यू नीड पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, नाउ इट्स आस्किंग फॉर योर पासवर्ड। नाउ लेट्स सी कि अगर आप कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाते हैं देन व्हाट हैपेंस। अच्छा, लेट्स मूव इनटू कॉन्फ़िग मोड। ठीक है, लाइन कंसोल 0, ठीक है, you're logging in and then you're applying your password, let's say cisco. ठीक है, so now again exit
एग्जिट इंटायरली। अच्छा जी, इनिशियली पासवर्ड मांग रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द पासवर्ड विच यू हैव अप्लाइड ऑन योर कंसोल पोर्ट विच वाज सिस्को, ठीक है। नाउ जो आपने एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड्स में जो पासवर्ड अप्लाई किए थे विच वाज सारा 1 2 3, यहाँ पे आपसे वो पासवर्ड मांग रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट एंड आवर लैब फॉर नाउ।